Hi, this is Shahid Kapoor and you're watching Bollywood Hangama. Okay, the interview that the Shanatics have been waiting for. We have with us Shahid Kapoor. Finally, Shahid, pleasure having you back on Bollywood Hangama. Thank you. And Shahid is looking all fresh. He's been doing interviews for a long time, but he's having that entire vigor and energy for his fans only. Okay, now Shahid Kapoor, you're having this very interesting sort of film in Rangoon, which is, I think, as almost everyone is saying, diametrically opposite to what you've maybe done with Vishal Bharadwaj in the past. Yeah. Somehow he gets the best out of you. Do you agree with that? Oh, absolutely. I think he's the most relevant filmmaker in my career. I think he has helped me discover things about myself which I also did not know. Whether it's him making me do Charlie and Guddu and Kamine, or him making me play Hamlet and Heather, I think those opportunities helped me find myself as an actor. And today, if I'm doing an Udta Punjab or if I'm doing a Padmavati, it's because I learned from him that I can rediscover myself, I can change my personality, I can surprise people by becoming different people. I didn't know that I was capable of that. So he's completely responsible for that, and I will always be thankful to him for that, for helping me see that side in myself. So how was the experience of shooting in Arunachal Pradesh? Because I think very rarely we have anyone shooting over there. The situations were extremely, I think, difficult as well in terms of shooting over there. I am a little bit of a veteran when it comes to shooting in these kind of places, because you know, अभी जब हमने हैदर की थी तो हम कश्मीर के सब तरह के इलाकों में गए थे. ऐसी ऐसी जगहों पे हमने शूट किया जहाँ पे 3-4 बार, जैसे ज़ैन कदल ब्रिज है, दैट्स बीन ब्लोन अप अ फ्यू टाइम्स. वी वेंट इनटू द हार्ट ऑफ श्रीनगर, प्लेसेस विच आर नॉट कंसिडर्ड कम्प्लीटली सेफ, और हमने वहाँ पे शूट किया. जब हमने उड़ता पंजाब शूट की तो वी वेंट इनटू द हार्ट ऑफ पंजाब एंड वी शॉट इन प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादातर लोग कई बार नहीं जाते हैं, वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, दिस एंड दैट, दे आर नॉट कंसिडर्ड वेरी सेफ टू शूट. एंड देन वी वेंट टू अरुणाचल प्रदेश अगेन, विच इज़ अनदर रिमोट पार्ट ऑफ you know our country. But I think these films give you an opportunity जो as an actor आपको नहीं मिल सकती. You do not have the opportunity of feeling your country, because आप स्टार बन चुके हो, आप एक बबल में रहते हो, आप कहीं भी जाते हो वहाँ chaos क्रिएट कर देते हो. आप जाते हो, लोग आ जाते हैं, कुछ हो जाता है. यू कैन नॉट गेट ऑफ, ढाबे पे बैठना, लस्सी पीना आप नहीं कर सकते. आप रोड पे जाके बस चलना महसूस नहीं कर सकते. आप किसी से चल के नॉर्मली बात नहीं कर सकते. आप ट्रैक्टर पे नहीं बैठ सकते. आप कितनी सारी चीज़ें जो यू नो, अगर आप हिंदुस्तान में ट्रैवल करो तो यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या महसूस करते हैं, ये चीज़ें आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाते एक बार आप स्टार बन जाते हो. तो इन फिल्मों के थ्रू वो मौका मिलता है. एंड रंगून इज़ अगेन अ फिल्म जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस कंट्री मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया था. मैंने पूछा भी था विशाल सर से कि यार आप हमेशा ऐसी कोई जगह ले जाते हो जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है शूट करना, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट अ शूटिंग फ्रेंडली प्लेस. तो उन्होंने कहा कि शायद जो मैं देख कर आया हूँ तुम देखो. एंड व्हेन आई गॉट देयर, आई मीन आई रिमेंबर यू हैव टू लैंड इन, यू हैव टू फ्लाई टू दिस प्लेस कॉल्ड दिब्रूगढ़. इट्स अ हॉप फ्लाइट. आप दिब्रूगढ़ जाते हो असम में, उसके बाद आप 1.5 घंटा ड्राइव करके ब्रह्मपुत्रा के बैंक्स पर पहुँचते हो. वहाँ पे एक टूटी फूटी सी एक बड़ी सी एक नाव टाइप चीज़ है, और उसमें आप क्रॉस करते हो फ्रॉम आसाम साइड टू द अदर साइड. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप जा रहे होते हो, पानी इतना शैलो होता है कि वो अटक जाती है, और वहाँ पे लाइट्स अलाउड नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड सनसेट. और तो हम यूजुअली उसी वक्त, बिकॉज हमारी फ़्लाइट ऐसे टाइम पे लैंड करती थी कि हम 4:30 पौने 5 वहाँ पहुँचते थे, और बिकॉज इट्स द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पे 5:15 बजे फुल अंधेरा हो जाता है. तो हम लोग अटक गए उसके अंदर, और अंधेरा था बिकॉज दे डोंट हैव टॉर्चेज और लाइट्स, बिकॉज यू नॉट अलाउड टू गो आफ्टर नाइट, बट वी गॉट स्टक, यू नो. एंड फिर हम दूसरी तरफ पहुँचे. फिर वहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव है और आप पासी घाट पहुँचते हो. पासी घाट वॉज वेयर वी वर स्टेशन फॉर द फर्स्ट 10 days. उसके बाद के 20 दिन जो हमने शूट किया वो पासी घाट से 3 घंटे की ड्राइव है, जिसमें से 2.5 घंटे रोड नहीं है. सो आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, लेकिन वो वैसी वाली ऑफ रोडिंग नहीं है जो आप रैलीज में देखते हो. वो ऑन वन साइड देयर इज अ माउंटेन, ऑन द अदर साइड देयर इज खाई, और जो रोड है वो एक्चुअली सिर्फ मड है. वहाँ हाईवे बन रहा है, तो वो हाईवे बनने के लिए जो मट्टी लगाई जाती है, हम उस पर ड्राइव कर रहे थे. उसके बाद आप 3 घंटे ड्राइव करके एक जगह पे पहुँचते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर पे सब चलता है. वहाँ मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, वहाँ लोग नहीं हैं. हम ऐसी कॉलोनी में रह रहे थे जो एक्चुअली वहाँ पे एक डैम बन रहा था. तो उस डैम के लिए जो वर्कर्स थे वो उस कॉलोनी में 2-2.5 साल पहले रहा करते थे. उनके लिए वो बनाई गई थी, बिकॉज वहाँ पे और कोई है नहीं, देयर इज़ नो सिविलाइजेशन देयर इन दैट एरिया.
तो वहाँ उसको रिफर्बिश करके हम लोग 15 दिन 16 दिन रहे एंड उसके बाद हम 2.5 घंटा ड्राइव करते थे इनसाइड टू बी एबल टू शूट इन द जंगल्स. So it really was pushing yourself in every way to a point where you actually went through something which I don't think many people would experience. And this film took me into those remote areas, and of course it's uncomfortable and you wonder, yaar, safe hai, nahi hai. There's so many thoughts that Right. pass through your head. Absolutely. But then you discover the wild beauty of your country. Correct. And Arunachal has that wild beauty to offer, and it's amazing. After the first 3-4 days, you know, you settle into it, and then you enjoy it for what it is. And it was very difficult because wild animals आ जाते थे, वाइल्ड काउज वो गेट तोड़ के अंदर आ जाती थी, कोई उठता था उसके टांग पे लीच चिपकी हुई है, खून टपक रहा है, you know, वहाँ पे फ़ोन तो था ही नहीं, खाने का भी मामला बहुत लिमिटेड था because you had to just carry your ration. And while going and coming 2 to 3 times we got stuck because the road वो बारिश हुई थी तो पूरा वो रोड ढह गई थी ही नहीं रोड. फिर वो ट्रैक्टर्स आते हैं बड़े वाले दोज and they were like making the road again literally, so you were stuck for 3 hours hoping that before sundown, because you can't drive at night because there are no street lamps and it's not safe to drive at night at all because you can't see the road, you can't see. So it was very extreme, but I don't think I would have experienced it if I hadn't done Rangoon. And maybe I think you've not spoken about this so far because I haven't read anywhere where you. Best for you, Faridun. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. शायद I must share something that a friend of mine told me, and it's in a lighter vein. So basically, he said that Shahid has had some experiences with censors in the recent past. Now, censors, censor board, and now when we are seeing the promos of Rangoon, so we are seeing that romance में रेत हो रहा है, तो कुछ घर पे कुछ censorship के issues face करने पड़े. That's what my friend actually had a question. जी नो एब्सोल्युटली इन अ लाइटर वेन. एंड मेरी वाइफ जो है थैंकफुली थोड़ी इवॉल्व्ड हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं और काफ़ी सेंसिबल हैं, तो वो जानती थी वो किन से शादी कर रही हैं, और शी इज़ एक्चुअली क्वाइट ओके विद दैट. शी डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल. इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब एंड शी इज़ क्वाइट अहेड ऑफ हर एज इन हर मेच्योरिटी, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन अ लाइटर वेन. In a light, but I think that's on a serious note. No, not at all. Yeah, but I believe that she is sensible. That's what you're trying to say. So Yeah, that's on a serious note. आपने बोला लाइटर वेन तो मैंने अच्छा, भी नहीं, कहा अगर आप मतलब lighter कि vein कोई में- सीरियसली ज़्यादा ना ले ले कि मैं Lighter- कुछ बहुत सीरियस बोल रहा हूँ. अच्छा नहीं, उन्हें लाइटर भी ना. मैं सब एकदम all good bro. नहीं, अगर Peace. मीरा ने अगर कहीं देख गबरू. लिया, so उनको लगे कि आप मतलब you're talking about me in a lighter vein. So you know, women they can. आपकी होगी शादी? मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत, in fact I can give you a lot of, we can have. लॉट ऑफ शेयर, लॉट ऑफ नोट्स. Definitely. शाम को भाई तो बैठेंगे बात करेंगे. इसमें तो कोई क्या हो रहा है हमारे साथ. चांस नहीं लेना चाहिए, कोई चांस नहीं लेना चाहिए. That's what I'm just. I agree with you. Okay, now you're talking about the fact that you worked in, say, extreme situations, extreme climate. You've done that in Heather. You've done that in Urta Punjab as well. Now, you know what I personally notice is that you're also the sort of movies that you're choosing. The fact that you actually say what you feel like, and you don't hold yourself back. I really like the fact when you just spoke about whatever happened with Mr. Bhansali recently on the Padmavati sets as well. Do you think it's important for actors, creative people to say what they genuinely feel? They should keep quiet. जो बोलते हैं उनको बुरी आदत है बोलने की, बिकॉज आप बोलते हो और फिर वो और बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है. तो बेहतर यही है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट रहो. जो आपके प्रोड्यूसर हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, वो और परेशान ना हो. आप ज़्यादा बोलोगे उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी, तो उनकी परेशानियों को कम करने के लिए थोड़ा कम ही कहना चाहिए. थोड़ा कम ही जाना चाहिए. Okay, and something about Padmavati, your character, because you're having an extremely important role in the film, and even from historical context, it's a very important character. How excited are you? फिल्म के अंदर किसी को पता नहीं जी, है. किसी को लगता है कोई नया बंदा करने वाला था तो तू क्यों कर रहा है. किसी को लगता है कोई बहुत एस्टैब्लिश ओल्डर स्टार करने वाला था तो तू क्यों कर रहा है. किसी को लगता है कि तेरा रोल है क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या है. अगर लोगों ने मेरा 14 साल काम देखा है तो बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप देख लेना जब आएगी फिल्म, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे. Right, because the way you've just building up your physique, the amount of साल सिर्फ पद्मावती शूट कर रहा हूँ मैं, और कोई फिल्म नहीं कर रहा हूँ. एंड आफ्टर उड़ता पंजाब एंड रंगून, पद्मावती इज़ द राइट नेक्स्ट फिल्म फॉर मी टू डू. इट्स आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड इन माई करियर, एंड आई हैव वर्कड फॉर 30 days with Sanjay Bansali, and I can say it's the best experience of my life. And I'm not somebody who likes to brag about my movies, but I feel the need to give that confidence to people who might be liking me or loving me and might be wondering.
I'm very happy with the fact that I'm doing the film, and I think it will be a film that will be memorable for everybody who's participating in it. Including Shahid Kapoor. Okay, now Shahid, we'll quickly take a few questions. There are, I think, more than 800 questions that we've received today. This is Elisa from France. Your best performance till date. Loved you in Urta Punjab. Thank you so much. I think it would be between Haider and Urta Punjab. It's difficult for me to choose because I think Haider is maybe a more complex character, but I think Tommy Singh was very different from me, and I didn't know how to relate to him. So both of them were the toughest. Even the way you supported Urta Punjab, I think that's almost everyone really appreciated that people, actors looking at a film in entirety rather than just concentrating on their own role, which is I think really was really. और एक्चुअली एक साल वो स्क्रिप्ट मेरे पास थी और कई बार मैंने अपने आप से पूछा भी कि यार एक साल कोई और एक्टर आया नहीं था, मैं 4-5 सीन अपने बढ़ा लेता. मैंने बड़ा सोचा ये, बट यू नो दैट्स नॉट द वे टू मेक मूवीज. यू हैव टू सपोर्ट अ फिल्म एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट, एंड इट्स द फिल्म मेकर्स विजन, यू नो, एंड व्हेन यू डू दैट समहाउ इट ऑलवेज बेनिफिट्स यू. मैंने जब भी वैसे काम किया है तो वो काम लोगों को पसंद आया हमेशा. Definitely, that's exactly what people said for Rang De Basanti for Amir, and today Rang De Basanti is Amir's film. Manize from Iran. Hi, my hero. What is that one thing about Nawab Malik that will stay with you? You're a huge lover. I think first of all, hi Manize, and thank you for sending me all your love. I think Nawab Malik is the most heroic character I have played so far. He is a patriot and he is bound by duty. और उसका जो अपने देश की तरफ जो उसकी फीलिंग है, जो उसका देशभक्ति का जो उसका इंटेंसिटी है, वो मुझे बहुत, इट रियली अफेक्टेड मी. वो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट he's probably one of the most heroic characters I have played or I have seen. Okay, this is Adnan Ahmed Hashmi from Pakistan. What was the toughest thing you had to do for your character in Rangoon? Can't answer the real answer, but I'll give you the second answer. I think prepping to be a Jawan was very, very difficult. I think to understand the physicality of these people and to be able to do the war sequences was very, 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 very challenging. Okay, this is Wajid Sheikh from Indore. What did you do for your latest birthday? मेरी तो बर्थडे अभी आई नहीं है, आने वाली है. Basically English सही नहीं है आप. मतलब आने वाली बर्थडे के लिए मैं क्या करना चाहूँगा? अच्छा, मैंने डिसाइड, मैं समझ, जी बिल्कुल सर, मैं भावना को समझने की कोशिश करूँगा. तो आपकी भावनाएं जैसी भी हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर भावनास. मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है. मुझे इतना पता है मैं अपनी फैमिली के साथ हूँगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँगा, अपनी बीवी के साथ हूँगा, अपने बच्चे के साथ हूँगा, और शायद मुंबई में नहीं हूँगा. बट आई हैव नॉट डिसाइड. आई यूजुअली लाइक टू टेक अ ब्रेक. Alright, this is Nimra from Pakistan. Can we expect a full-on dance movie after Padmavati from you? Yeah, I think I also want to do a full-on dance movie after Padmavati, because both Padmavati and Rangoon I am not going to be dancing at all. So yeah, I would love to do one. Not even like a dismal thing in Padmavati? No, I'm not dancing in Padmavati. Okay. This is Sona from Haridwar. Tell us about a time where you had a difficulty with a character. What was the character and why was it challenging? I found a lot of characters difficult. I found Aditya Kashyap of Jab We Met very difficult because he was a very quiet character. And you know, कूदने फांदने वाले characters तो मिल जाते हैं, but quiet characters को play करना आसान नहीं होता है, because you don't have the support of dialogues, you don't have the support of the script. It has to be performed and it has to be felt without words. And I think even Nawab Malik is a character like that. You know, he's very quiet in many ways. So when you read a script, how do you interpret the silence? You know, it's very difficult. So you have to actually create that and feel it and create that graph in your head where a character who might speak a little less, he sometimes can be more effective than a character that speaks a lot also. But you need to be able to create the silences. So these two things are kind of similar in Jab We Met and Rangoon and Nawab. Even the pronunciation, talaffuz, like जिस तरीके से आप जाती कहते हैं, many times people wouldn't be able to. That I've been very lucky actually. मेरे grandparents दोनों जो थे वो जर्नलिस्ट थे, राइटर्स थे, तो और यू नो वो मुस्लिम बैकग्राउंड हेल्प करता है, बिकॉज माई मॉम साइड ऑफ द फैमिली बहुत ही फ्लुएंटली बात करते हैं वो इन उर्दू, वो रशियन भी जानते थे. तो आई हैव हर्ड दैट सिंस अ वेरी अर्ली एज. तो शीन काफ का कभी प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज वो बचपन से ही सुना है मैंने. Even the era that you're trying to portray, that 40s, and Urdu was quite spoken a lot at that point of time. Of course, I mean the character is Nawab Malik, so उसके अंदर वो लहजा तो होना ही चाहिए, which reflects his upbringing. Alright, this is Rohit Raikwar. What is your greatest strength and weakness? I think
I think it's the same thing. I'm a quite an emotional person, and I think that's my greatest strength and my greatest weakness. Okay, this is Prasad from Mumbai. This is very interesting. From Tommy to Nawab Malik, how do you change the depthness and pitch of your voice? That's a very interesting question. मैं कभी डिलिबरेटली कुछ नहीं करता, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे जान डीप बोलना है तो मुझे ऐसा उस पर ध्यान देना चाहिए, या मेरे को अगर हाई पिच बोलना है, बिकॉज आई थिंक वो करते हैं तो फिर वो फेक लगता है. इफ़ यू आर ट्रूली इन द राइट मूड, बिकॉज आई थिंक जैसे हर इंस्ट्रूमेंट का एक साउंड होती है, उसी तरह हर परफॉर्मेंस का एक टोन होती है, एक सुर होता है. तो वो आपके कैरेक्टर का सुर क्या है, वो उस सुर से एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे जाएगा, बट ओवरऑल हिज एनर्जी विल बी लाइक दैट. तो जब आप करेक्ट हेड स्पेस में होते हो तो आई थिंक वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करता है उसको. ज़्यादा उसके बारे में मैंने किया भी है, पहले कोशिश करता था मैं करने की, और वो हमेशा समहाउ ऑर्गेनिक नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ, यू नो, तो वो सही नहीं है. तो आई जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग एल्स हैपन्स, यू नो. मुझे 2-2.5 महीने 3 महीने प्रेप करने के लिए मिलते हैं, बिकॉज मैं अपनी लुक चेंज करता हूँ. तो एट दैट टाइम इफ यू थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर एंड इफ यू स्टार्टेड क्रिएटिंग हिम इन योर system, automatically those changes kind of tend to happen. Definitely, and I was reading one of your interviews. You said that you've turned a lot spiritual in the last few years, and that has affected your acting in a way as well. Well, I was always spiritual. I think I've just maybe connected with it more now. Yeah. Okay, yeah, this is Pyar Shasha from Turkey. This is Siddika. Which is your favorite song and dialogue from Rangoon? So my favorite song in Rangoon is Ye Ishq Hai, but I also really like Alvida. These are two songs I really like. I can't honestly think of a dialogue from Rangoon because I think, you know, most of the dialogues of Nawab will reveal the story of the film. I think एक बहुत अच्छा dialogue है कि हाँ वो जिसके लिए मरा जा सके. Yeah, this is Nimra Arif from Pakistan. Tell us your reaction when you held Misha for the first time. Cannot explain. Have to experience. किसी ने बहुत इंटेलिजेंट इंसान ने कहा था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, पेरेंट्स एंड एवरीबडी एल्स. सो यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट व्हेन यू एक्सपीरियंस इट. एंड हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू सी ऑल दीज Twitter profiles of your fans with the picture that has recently come out of you and of Misha, and it's a happy feeling. I feel very happy that people are sending her so much love. I wish they all send her blessings and love, and I hope that those blessings and that love, you know, makes her a better person. This is Harditya from Toronto. If given a chance, which genre would you like to explore next? Spy, sports, or action? All three. I would love to do all three. There's quite a bit of action in Padmavati, so maybe either a spy film or a sports. Sports is interesting. It's a very interesting space, but you need to find a story there. So it depends. I will engage with whatever film has a story worth telling, regardless of the genre. That's important as well. This is Amir from Germany. How would you describe your journey till now in 3 words? Long, short, lots to come. Jyoti from Australia. Hey Shahid, what did you learn the most from the sets of Rangoon? Lot of respect for the armed forces. Learn to respect them a lot. Okay. Nikunj from Mandvi, Kutch. What is the weirdest thing a fan has ever done for you? Try to enter my house through a small window this big. So yeah. Khadija from South Africa. The one thing that happened while shooting that will stay with you forever. You know, the opening sequence of the film has, I mean, it's me running, and there's a lot of blasts that happened around me, and there were some 6 or 7 blasts that happened, and they're very loud. I remember that day, that moment will just stay with me because, you know, it's like this moment of chaos in the middle of war. How a soldier feels when he's in the middle of it and he doesn't know what's going on and he's just going through, you know. That was a very strong experience for me. Like it'll really stay with me because it's very overwhelming to feel that what I when it happened, because we tried to recreate it and we tried to do it in one shot. We wanted to capture the whole moment. It's actually the opening of the film where it just starts like that, and that was very very overpowering, very overwhelming. This is Sagar. You said you will do a content-driven films only. So does that mean no to masala entertainers? I don't know what these 2 words mean. I always find it strange. लोग हर चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं. ये कंटेंट है, ये मसाला है. What is मसाला? मतलब क्या मतलब होता है उसका? Senseless? Yeah, I don't know if I'll be able to do a senseless film. Entertaining film which has something fresh to say. I would be very happy to do it. I love watching all kinds of films.
But if it's just a rehashed version of what one has been seeing over the years, I don't know if I have the bandwidth, but don't hold me to it. Tomorrow I might get tired of doing something and say, yeah, let's just try something different. VFX or camera work in Rangoon, I think that's looking very interesting. Something about that? Yeah, I mean, it's a scaled film and there's a lot of VFX in the film. Pankaj Kumar, who did Heather, has done Rangoon as well. He's a very talented new cameraman. I think he gets along very well with Vishal, so I think they're very good with each other. And unlike how you would expect कि पीरियड फिल्म होगी तो सब ऐसे स्लो शॉट्स होंगे, जिब मूवमेंट होगा, ट्रॉली, बिल्कुल भी वैसी फिल्म नहीं है. उसको हैंड हेल्ड शूट किया गया है, सीन्स को बहुत कंटेम्प्रेरी वे में शूट किया गया है. यू फील दैट यू आर एक्चुअली देयर, एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द वे दैट दे हैव अप्रोच्ड द सिनेमेटोग्राफी एंड the way that they have used the camera was very nice. Okay, and your favorite song? ये इश्क है. Okay, and this is Jasmina from Germany. If all your film characters were real, I think this is an interesting question. If all your film characters were real, with whom would you like to be friends with? Okay, before that I did Tommy Singh. I don't want to be friends with him at all. You said that. Heather is crazy. I don't think I want to deal with somebody who goes bald and talks in the middle of a chalk like that. Nawab Malik will be doing his duty and will be at the border, will be too concerned about the country. I want you to make friends with him. Raja Rawal, Ratan Singh probably wouldn't allow me to enter his chamber. So I would be a very lonely man. Anything from the past? Anything from the past character that you've done? Yeah, maybe, I don't know. Actually, आदित्य कश्यप भी बहुत बेकार टाइप का आदमी है. वो ठीक से बात भी नहीं करता है. वो उसको तो गीत जैसी लड़की को इतना टाइम लगा उससे 4 डायलॉग बुलवाने में. तो ऐसे इंसान के साथ why should I waste my time? So basically, nobody is offering me friendly characters. That's a good learning for me. Thank you very much, Jasmina. Thank you for helping me learn that about myself. I need to play friendlier characters. Right. And Shahid will be in this interview. Many of your fans, they've been requesting if you can hum a couple of lines from Ye Ishq Hai. ये इश्क है. यार मैं बहुत खराब गाता हूँ. फरीदून, how can I be singing when I'm sitting in front of such a good singer as you? You sang the last interview as well. मेरे को याद भी नहीं है गाना एक्चुअली ठीक से. Do you remember the? I can give you the lyrics. I just know मैं ये इश्क है ही गा देता हूँ बस. मैं आपको दे सकता मेरे हूँ. को याद नहीं है उसका. एक सेकंड. अगर आप मतलब in the sense if you want to that's about it, like wouldn't want to force you. लिरिक्स में आपको मिल जाएगी, बाकी आप जैसा सही समझे. हाँ जी, this is it. You want to just take the hook line or? ये इश्क है, ये इश्क है. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to thank my father and my mother who have given birth to me, gave me a terrible voice. And after this, Faridun will play a video of his next album where he's singing beautifully, and you'll forget this terrible moment in the interview. Your father has seen the film, he's liked it very much. Yeah. And he's a tough critic. He is tough on himself as well. Yeah. He didn't see the final version of the film. He saw an earlier version because Vishal sir wanted to share it with certain people for feedback. And he really liked my work in the film, and he told me that, there's no Shahid in Nawab Malik, and for me that's a huge compliment. क्या बात है. Thank you very much, Shahid. Lovely to have you, and all the best wishes for Rangoon. Looking forward to Padmavati and more work from you. Exciting stuff that you're doing, and we've been talking to you for a long time. I'm very happy to see the journey. Thank you, and happy birthday to you in advance. Thank you. That's all we have from Bollywood. Keep on watching.